Hi students, welcome again to my channel CS Bhasha. In today's video, we will basically learn that when we have different variables of the type integer and float and string, and then what are the different possibilities of performing the arithmetic operations on them. मैं आपको ये चीज़ explain करने से पहले I would like to show that to you कि suppose if I have नंबर्स, ठीक है, तो हम लोग इंटरैक्टिव मोड में काम करते हैं. मेरे पास सपोज दो वेरिएबल्स हैं, a इज इक्वल टू 12 एंड b इज इक्वल टू say 5. Okay, and I would like to print and I would like to simply use the arithmetic operator with them. So I'll say a divide by b, comma a float division by b. Similarly, I say a multiply by b, and then finally I just press enter. सो आपने एक चीज़ नोट करिए कि जब भी डिविजन होती है दैट डिविजन ऑलवेज गिव्स मी द कंप्लीट आंसर irrespective of whether the number is completely divisible or it is not divisible, which means that अगर आप दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो आपका आंसर डेफिनेटली डेसिमल में ही आएगा, जो मैं आपको अभी नेक्स्ट एक और स्टेटमेंट में भी दिखाऊंगी. फ्लोट डिविजन का मतलब होता है कि यू विल ओनली गोइंग टू गेट द नियरेस्ट पॉसिबल स्मॉल इंटीजर वैल्यू विच इज़ विद रिस्पेक्ट टू द रिजल्ट. अब जैसे अगर मैंने a डिवाइड बाई b किया तो मेरा आंसर क्या आया 2.4. इससे छोटा नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू कौन सा हो गया 2. देयरफॉर a डबल डिविजन b विल गिव मी दैट फ्लोट डिविजन. और मल्टीप्लाई तुम सिंपल ही है. अब इसी चीज़ को अगर मैं एक बार और कॉपी करके लिखते हैं, a इज इक्वल टू 12 सेमीकोलन b इज इक्वल टू 2 एंड देन इफ आई से प्रिंट a डिवाइड बाई b, तो आपके हिसाब से ये आंसर क्या आना चाहिए 6. लेकिन आंसर 6 नहीं आएगा. देखिए क्या आंसर आएगा, इट विल बी 6.0. सो पहली चीज़ हमें रूल याद रखनी है दैट वेन एवर वी आर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, स्पेशली द डिविजन बिटवीन two either integer variables or an integer or a float variable, my answer will always be a float, because अगर वो डिवाइड हो भी जाता है तो भी आंसर किस में आएगा डेसिबल के अंदर. दूसरी चीज़ हमने अभी क्या देखी कि अगर मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं और मुझे फ्लोट डिवीजन निकालना है, तो अगर आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू आती डिवाइड करके उससे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होती. इसका मतलब है कि मैं अब आपको इसी चीज़ को लेकर एक बहुत बढ़िया एग्जांपल बताती हूँ कि अगर मेरे पास a इज इक्वल टू -12 है, ऑल राइट, एंड b इज इक्वल टू से आई हैव द आंसर नॉट 3, लेट मी हैव इट एज ओके 4 भी डिविजिबल हो जाएगा, 5 कर लेते हैं. सो व्हाट विल बी माय आंसर इन दैट केस इज व्हाट आई नीड टू नो. अब अगर मैं सिर्फ 12 को डिवाइड करूँ 5 से तो हमारा आंसर क्या आएगा 2.4. लेकिन अगर मैं a को डिवाइड करूँ b से तो हमारा आंसर क्या आएगा -2.4, बिकॉज दोनों में से एक नंबर नेगेटिव है. अब इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू -2 नहीं है, बिकॉज -2 इज ग्रेटर देन -2.4. इसलिए इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगा -3, विच मीन्स नाउ इफ आई ट्राई टू से प्रिंट a फ्लोट डिविजन ऑफ b, माई आंसर विल बी -3. बस नेगेटिव नंबर्स में आप लोगों को ध्यान रखना है that when you're trying to find the float division between two integer values where one of the numbers is a negative number, this is how the calculation actually takes place. Okay, so we all know what is a remainder. Now if I'm trying to find a remainder with where one value is negative, उसका एक फॉर्मूला बड़ा होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. So if I say print 12 mod 5, so I will going to get the answer 2 in that case. Okay, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि अगर मैं यही चीज़ नेगेटिव नंबर के साथ करते हैं अगर हम लोग, और मेरा आंसर होता -12 mod 5, okay, what would have been my answer? Just see, my answer would have been different. It is 3. Similarly, अगर हम इसी चीज़ को चेंज कर देते, -12 की जगह हम लिखते -12 mod 5, -5 कर देते, मतलब आपका डिनोमिनेटर अब नेगेटिव है, तो क्या आंसर आता -3. अगर हम लिखते हैं प्रिंट -12 mod -5, ओके, देन आई वुड हैव गॉट द आंसर -2. सो ये देखिए चारों केसेस में हमारे पास आंसर क्या है डिफरेंट है. बेसिकली
कभी भी दो नंबर्स के बीच में जो रिमाइंडर होता है वो कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है. फॉर्मूला क्या होता है? यू नो देयर इज अ न्यूमरेटर, देयर इज अ डिनोमिनेटर. सो इफ आई जस्ट टेक दिस पर्टिकुलर केस, what is it trying to tell me? It says that if I have two numbers x and y, where x is a numerator and y is a denominator, तो ये कैसे कैलकुलेट करेगा? इसका कैलकुलेशन का तरीका क्या रहेगा? मैं यहाँ पर आपको एक हैश करके दिखा देती हूँ. हैश में इफ़ आई हैव टू नंबर, से फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ प्रिंट 12 मॉड -5 का ही एग्जाम्पल लेते हैं. तो ये कैसे कैलकुलेट करता है? ये कहता है कि आप न्यूमरेटर लीजिए. न्यूमरेटर में अब आप यहाँ पर लिखिए माइनस और यहाँ लिखिए ब्रैकेट. ओके, नाउ यू फाइंड द फ्लोर डिविजन ऑफ 12 एंड -5. जो मैंने अभी आपको बता दिया फ्लोर डिवीजन कैसे होता है, और उसको आप सीधा मल्टीप्लाई करिए किस आंसर से? डिनोमिनेटर से, विच इज -5. Okay, now if you try to calculate, what will be your answer? Your answer will be 12 minus, what is the floor division of 12 and -5? I just told you the answer is -3. So it is -3, and then this -3 is multiplied with -5, where now you further do the calculation and the answer is 12 minus 5 threes are 15, and hence your answer is -3. सो अगर हम इसको एंटर करेंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? -3. मैं आपको एक बार और दोबारा बताऊंगी कि अगर अब हमारे पास यही चीज़ इसकी जगह ऐसे होती, मतलब -12 और 5 होता, तो हम कैसे लिखते? क्या मैंने आपको बताया था? न्यूमरेटर लीजिए -12, फ्लोर डिविजन ऑफ -12 by 5 multiplied with 5, because denominator positive है. Okay, so your answer will become -12 minus, this remains -3 because -12 floor division of 5 will remain -3, multiplied with 5, and hence your answer will be -12 plus 15, and therefore your answer is not -3, your answer is +3. When I press enter I will get the answer 3. So अब children आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फ्लोर डिविजन नेगेटिव नंबर के साथ कैसे कैलकुलेट होती है. साथ साथ you would have also understood that if I am trying to find the remainder between the two numbers, then how, if there is a negative number, one of the numbers is a negative number, how are we supposed to find out the remainder also? Okay, one more interesting thing that we have with integer values is that if I'm trying to say a का स्क्वायर रूट निकालना है, एंड सपोज a is equal to say 3, I would like to find the square root. Unlike the other programming languages where we used to apply the function, here we don't have to apply the function. It's simply very convenient to find the power. Now what do you mean by square root of a? The square root of a is a to the power of 1 by 2. So to find the power we have an exponential operator, and we simply say 1 divided by 2. That's it, and I will going to get the answer this. I can even write it like this. I can say this a star star 0.5, and I will going to get the answer which is same. So that's very convenient to work in terms of this in Python. Okay, अब ये तो मैंने आपको बताया integer values के अंदर. यही चीज़ अगर हम floating point values में लिखते हैं, या अगर हम लिखते हैं कि एक integer है और एक float है, तो हमेशा याद रखिए हमारा आंसर फ्लोट में ही आएगा. सो इफ आई से a is equal to 12, semicolon b is equal to 2.0. okay, and if I now try to say print a by b comma a floor division by b, so and then I say a mod b. Now if I try to press, can you see? You will going to see value after the decimal point as 0 in all the three cases. So if one of the values where you're using the arithmetic operator is a floating point value, all your answers will be floating point. Okay, so that was first thing that I wanted to tell you. So just have a quick revision, and these are few examples that I've written for you, and some of the examples I've already shown you. They will going to give you this output. You can always check it whether you're getting the same answer or not. So you're supposed to remember that if you're doing the division, your answer will always be float. If you're
finding the remainder of two integer variables or a float division of two integer variables, your answer will always be integer. But if it is for float and integer, your answer will always be float. And the float division means the smallest possible value of the result, which is of the result that you would have received by dividing the two numbers. Okay, so calculation between integer is integer, calculation between integer and float is float, and we can always find the square root by star operator. Okay, now let's see how are we supposed to handle the string value. String values को handle करना बहुत आसान है. अगर हम इसको quotes में लिखें, good day, okay, and if I say print a, it's simple. I can also write the same string. So I can also write the string in single quotes. So if I say good day and I try to print a, it is just the same thing. So I'm just trying to say that you can have your string in single quotes as well as in double quotes, and you can also have a combination. Suppose अगर हमें क्या करना है, if I want to show some quotes within the string, I can also say गुड डे. अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी कंफ्यूजन आपको याद रखनी पड़ेगी. अगर सपोज मुझे डबल कोट्स दिखाने हैं, सपोज आई वांट टू शो डबल कोट्स हेयर ऑल्सो एंड हेयर ऑल्सो एंड देन डबल कोट्स, सो हेयर इज अ प्रॉब्लम दैट कैन बी शोन विच वी कैन ऑफकोर्स सॉल्व. सो ऐसे केस में हमारे पास क्या आएगा, सिंटैक्स एरर आएगा. इस एरर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि just remember that if you want to show double quotes, then enclose your string with single quotes, and if you want to show single quotes, enclose your string with double quotes. So when I say now print a, see, my answer will be shown in double quotes. If I just do the vice versa of the thing and I use double quotes right over there and I would like to show the single quotes, then I will just do the opposite. And if I now press enter and I say print a, can you see now I have single quotes? So that is one of the ways that you can, through which you can show single and double quotes. The other way is by using an escape sequence. देखो, escape sequence is basically a character that you can use to change the meaning of a particular letter or a character the way it would have been used. Like for example, if I say a is equal to hello /n class. All right. So now when I press, okay, this has an end of file because I used double in first case and the single in the second case. So I'll just make it more, okay. Now when I say this, hello /n class, it becomes like this. Now I'm trying to store it into a variable. A is equal to in this way. But when I say print of a, okay, can you see hello and class, they are coming in two different lines, because what happens is it reads the string and the moment the slash comes, this slash and the character which is immediately next to it, it changes its meaning. So the meaning of n is changed and /n becomes a line break. Therefore after hello there is a line break, then there is a space of one column and then you see class. Therefore this slash is called as an escape sequence. इसी तरह से अगर मैं इसकी जगह ऐसे लिख देते अगर हम लोग, ठीक है, if I would have written something like this and I would have written // now you see what will going to happen. So if I say semicolon print a, I would have got the guess. What answer will I going to get? See, I will get /y because of the first slash which acts as an escape sequence, it will going to change the meaning of another slash. Therefore this slash appears as it is and therefore you will going to get class. Now if I just further change it to this one and I say hello, not this one, and I would like to show double quotes at the end of class like this, okay. So what I do is just I change the meaning by putting a slash over there, and now when I press enter, can you see hello class, and it is ending with double quotes. So basically this is what is the beauty of using this escape sequence, because it escapes a particular character from behaving like a normal way the moment it is being used, okay. So if I just have to quickly do the revision, remember this, these are basically different ways with the escape sequence and without the escape sequence. You can enclose your string in double quotes, you can enclose it in single quotes, and you can have quotes in between also. Now there's one important thing that you should remember.
the possible operators which are allowed in a string are only two. If I say a is equal to 12, please note this 12 is not an integer value because it is enclosed in double quotes. Anything which is enclosed in double quotes is a string value. Then I say b is equal to 13 or 14, all right, and then I say print a plus b. So first operation which is allowed with the string is plus, where it takes a value of the first string and attaches with the value of the other string, and this concept is called as concatenation. And the second most interesting thing is, if I say print a star 10, just see what happens. Can you see? So 10 times whatever was a value in the string got repeated. So if I want to show a line of star, I don't have to use this, and I can say into 80 and see, I'll get a wonderful line of stars. Okay, so this is, again, as I say, is beauty of the language. It's so convenient for us to use it. So thus the two operators which are possible with the string are, one is the multiplication and the other is plus. When we are using plus, it becomes concatenation. When we are using multiply, it will going to repeat that string that many number of times. इसके अलावा कोई और ऑपरेटर अलाउड नहीं होता स्ट्रिंग में कैलकुलेशन करने के लिए. ऑलवेज रिमेंबर दिस. अच्छा, अब हमारे पास अगर एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन आ जाती है तो उस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे. अभी तक तो हमें पता है मैथ्स में वी अप्लाई अ बॉड मास रूल, लेकिन नाउ यू लुक एट दिस एक्सप्रेशन वेयर डी इज रिटन एज ए डिवाइड बाय बी इंटू 2 प्लस सी. सिमिलरली प्रिंट द वैल्यू ऑफ डी, सिमिलरली प्रिंट ए माइनस. तो ऐसे में कैलकुलेशन कैसे होगी. व्हेन एन एक्सप्रेशन इज गिवन टू यू, देयर आर सर्टेन रूल्स दैट यू नीड टू follow, and according to the precedence of the rule we solve the expression. And just have a quick look at the operator precedence. Please remember, children, first of all, the priority is always given to the bracket. The second priority is always given to star star, which is exponentiation, and then unary operators, that's plus and minus. Then we have all these into, divide, floor division, remainder, whichever comes from left to right. So you're supposed to remember that. Then plus and minus, that means addition and subtraction. And then bitwise and XOR and all, we're going to do it later. So just remember that we also have these a membership operator and an identity operator, which are given again less priority as compared to multiplication and all, and addition and all. And finally this. So this इसमें हम पूरे टेबल में सब कुछ तो यूज़ अभी नहीं करेंगे. हम बेसिकली यूज़ क्या करेंगे, ब्रैकेट्स, एक्सपोनेंशिएशन and plus minus and of course addition, multiplication and all. So याद रखेंगे आप लोग, जो भी expression में left to right first आएगा, पहले priority उसको मिलेगी. So rules क्या है, operators which are in the same box will have the same precedence and they are always calculated from left to right. सिर्फ इसमें एक exception आपको याद रखनी है कि exponentiation जो है that is always calculated from right to left. So here is an example which is given to you. That means if I write 3 into 2 into 2, इसका मतलब ये है कि 3 into 2 3 to the power of 2 पहले calculate नहीं होगा, पहले calculate होगा 2 to the power of 2. You'll get the answer 4, and then it will be 3 to the power of 4, and you're going to get the answer 31. Okay, so now I think you're able to solve this expression accordingly. So अगर हम इसमें देखें divide multiply, तो divide और multiply का precedence एक जैसा ही है, इसलिए पहले a डिवाइड बाय b कैलकुलेट होगा, फिर b इंटू 2 कैलकुलेट होगा, एंड फाइनली एडिशन होगा. सेकेंड केस में e के एक्सप्रेशन में क्या होगा, सबसे पहले हमारा कैलकुलेशन होगा a टू द पावर ऑफ c, और वो जो आंसर आएगा वो माइनस होगा b के वैल्यू से, देयरफॉर योर आंसर इज नेगेटिव. तीसरे केस में पहले आपका फ्लोर डिवीजन कैलकुलेट होगा, जो आंसर आएगा उसका नॉर्मल डिवीजन कैलकुलेट होगा, एंड देयरफॉर योर आंसर विल बी 0.5. In last part, a normal division is calculated, and then whatever is the answer उसका floor division calculate होगा, and hence you will going to get the variables हैं a is equal to 10 semicolon b is equal to 3 and semicolon c is equal to 2. So you are supposed to remember that if I am trying to calculate print b star star c star star b, so सबसे पहले क्या कैलकुलेट होगा, c to the power of b, which means 2 to the power of 3, which means 8, and then 3 to the power of 8, and therefore you will going to get a bigger answer. If I would have written print
B, floor division of C, further floor division of C. सो इसमें कैसे कैलकुलेट होगा, पहले फ्लोर डिवीजन ऑफ ये कैलकुलेट होगा और इसका आंसर फर्दर फ्लोर डिवीजन ऑफ सी. इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 3 है डिवाइड बाय 2 है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1. 1 को आप फर्दर डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 एंड देयरफॉर यू विल गोइंग टू गेट द आंसर 0. सो सारे ऑपरेटर्स लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेकिन अगर एक्सपोनेंशिएशन आपका एक ही बार इकट्ठा है तो हमेशा वो राइट टू लेफ्ट चलता है, अदरवाइज देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस एंड नो limitations with this. So I hope children you've understood how the operator basically work and how is an expression calculated in Python, and some interesting calculations with respect to the strings and all. So if you like the video, please do press the like button, share and subscribe. Thank you so much and have a lovely day. And yes, there is a small quiz also, you will, for the link for which you will be finding in the description section. So please click and do test your skills. Have a wonderful day.